student is ready, the teacher arrives, right? The only rapper they know is Bohemia. Brands भी बहुत गंदी तरीके से exploit करते हैं artists. So I'm not the kind of person that likes all this shit. मतलब मुझे brand and is paying me well. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। देसी बैठक की एक और किस्त पे मैं हूं आपका होस्ट लोधी। और आज की बैठक में जो हमारे मेहमान हैं, फॉर मी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पंच लाइनर्स इन उर्दू रैप। अगर आप उर्दू गैंगस्टर रैप और उर्दू पंच लाइन्स के फ़ैन हैं तो आई एम श्योर आप ऑटोमेटिकली इस इंसान के फ़ैन हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम हाशिम इसहाक aka Big H. Hello my brother. How you doing? I'm good. Thank you for having me, Fayuk bhai. All good. How are you? All good, bro. All good always, man. You know, it's all love. And ज़रूरी था एक इस तरह का सेशन करना because since I've been following you, Hashim Ishaq काफी evolve कर गया as an artist. Not just like as an artist, I'm sure as a person. Thank you, bro. ये आपका प्यार है and I think this is important. Yeah, I think the growth is something. I think we had a podcast. Yes, exactly. We had a podcast last year, I guess, and none of us recorded it. Exactly. Yeah. वो भी चली गई ऐसी. ऐसे ही हुआ और उसके अंदर भी कई इस तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने की थी। आई थिंक उनको आज जरा रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे। बिल्कुल। और ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव्स भी बदले होंगे अब मेरे, क्योंकि आई हैव इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन एज वेल। तो जो मैंने उस टाइम पे बातें की होंगी वो इस वक्त रेलेवेंट ना हो शायद। नो एब्सोल्युटली। और एक और भी चीज है, लाइक विद द एज भी बंदा बड़ा होता है, बट एज एन आर्टिस्ट आप क्या कहते हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा होता है विद एवरी अदर ट्यून दैट यू आर मेकिंग। आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हो। That's true. Makes sense, yeah. And amount of music you've been releasing recently, I'm quite sure के you know it really helped you evolve. क्योंकि I know there's a cause and effect कि आप जितना ज्यादा म्यूजिक बनाते हो आपको उतना ज्यादा फीडबैक मिलता है, आप उतना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हो basically. What do you think about that? Let's start with this. Like typical बातें तो बाद में करेंगे, इस philosophical discussion पे पहले चले जाते हैं कि do you think when you make the quantity of music then basically you start getting feedback and then you start adjusting your sound according to that feedback. Do you think that is something that helps, or is it always about self-expression and where you are, and what do you think about that? It definitely helps because there's a saying that when the student is ready, the teacher arrives, right? So Shiroz happened to be that teacher for me. Oh, wow. So Shiroz, like, he told me where I was lacking and what I should do. He still tells me what I'm like doing wrong. So I keep on polishing that stuff back to back. And with every release, I'm trying to get better with time. So when back in 2018 and 19 when I used to record shit, मैं क्या करता था, मैं अंदर जाता था स्टूडियो के, जो भी रिकॉर्ड किया जैसा भी हुआ आ गया बाहर, that's it. Now until I'm satisfied, until Sharoz is satisfied, because he's the producer and he has to deal with all that shit, he has to make it good. तो उसको अगर नहीं समझ आ रहा और मुझे नहीं समझ आ रहा, परसों मैंने 30 टेक्स लिए हैं, हालांकि बहुत सारे टेक्स उसमें से सही थे, लेकिन I just had to make it sound perfect. लेकिन वो 30वां भी सही नहीं हुआ, and then I ditched the song. मतलब ऐसा भी हो रहा है कि मैं ditch कर रहा हूँ song, scrap out कर देता बंदा। I won't try it. Yeah. हाँ बिल्कुल। तो obviously with quantity हमारी जो है ना अंदर एक अलग ही चल रहा होता है सिस्टम। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। but do you think क्या कहते हैं वो उसकी क्या रीजन होती है, लाइक वो कहाँ पे, ओके आई कैन अंडरस्टैंड कि कहीं फ्लो में लैग कर रहा है या कहीं फील में लैग कर रहा है या कहीं, मतलब वो कौन सी मेन चीज है कि अगर वो इफ यू कांट गेट दैट राइट यू आर नॉट गोइंग टू रिलीज द सॉन्ग, व्हाट इज दैट थिंग, लाइक इज इट लाइक बहुत सारी चीजें हैं या कोई एक दो पर्टिकुलर चीज है? फॉर मी यूजुअली
For me, usually is the expression, right? The sound of it. Lyrically, तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है Yeah. system, and flow wise भी we can like play around. But Mhm. somewhere whenever I lack in the expression, like the ability to express it and make it sound like I mean it. Yeah. If that doesn't sound right, I diss it. Like Is it the right cadence? That's the word I always use. Like if you yeah, can't get the right yeah, the cadence right for it. cadence. Yeah. I wasn't using the word cadence because Darby लेते हैं मेरी उस पे ना बहुत ज्यादा. I remember that Facebook post, yeah. Bro, यही तो बात I है wasn't क्योंकि I trying to think use that word. वो मैंने देखा था वो शो में. I never watched that show ever. I'll Yeah. say straight away. But दो किस्तें देखी हैं मैंने. Your one and Moji one. I watched the episode. I watched the I watched like the one where Moji was there and the one where I was there. बस वही दो देखे मैंने. मैंने भी वही दो ही देखे But हैं the बस. thing is, the thing with that show as well, उस show का मसला ये है कि I think they couldn't execute it like it was supposed to be done. Mhm. Plus, the choice of rappers, there was some good rappers that I know personally. Like in the choice of rappers, I think they could have done better. Yeah, I think if you're talking about the show, then like I've got some opinions about it as well. I think होता ये है कि आप क्यों आई थिंक मोटिवेशन मैं हमेशा कहता हूँ मोटिवेशन बड़ी काउंट करती है. तो अगर जो प्रोड्यूस करने वाला बंदा है अगर वो ये देख रहा है ना कि यार आजकल हिप हॉप बड़ा इन है सो लेट्स मेक अ शो अबाउट इट तो दे कैन नेवर गेट इट ऑथेंटिक लाइक वो फ्लेवर नहीं ला सकते जो रॉ ऑथेंटिक फ्लेवर है. They're not doing it for the culture. वो वाला सीन नहीं है obviously. मैं मिला हूँ बैकस्टेज भी प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से एंड आई हैव बीन इन टच विद देम. तो वो लोग जो है ना सोली बस इस वाली इमेज में फंसे हुए कि वी आर द फर्स्ट वन टू डू दिस शिट, फर्स्ट टीवी शो दैट सपोर्ट्स हिप हॉप. तो वो उसी इमेज में फंसने के चक्कर में दे couldn't execute it well. Can I ask you a question about it? I think we yeah sure. Bro, do you think they are fan of hip hop at all? The people who are actually making the show. This is something kind of bugs me a little bit. No, not at all, not at all. They're not the fan of the show or fan of the art because मैंने उनको देखा है उनसे बात भी की है और मैं उनको जानता भी हूँ जो लोग involved थे इसके अंदर. They don't know shit about hip hop. Like the only rapper they know is Bohemia. And anyone that is popping right now, that's all they know. They don't know about the culture. They don't know ABC. They don't know their like ABCs. They don't know what like beatboxing is. They don't know what b-boying is. They're unaware of the culture. Elements of hip hop और वो indie और मैं ये भी expect नहीं करता हर किसी को in depth knowledge होगी. मैं ये भी expect नहीं करता हर किसी को in depth knowledge होगी. मेरा सरसरी सा सवाल इस वजह से था कि हाँ in depth knowledge तो नहीं है लेकिन वो basic knowledge भी नहीं है उनको. But the thing is कि they wanna make money out of it obviously. तो हाँ और हम लोग गए मैं भी गया था शो पे ये सोच के कि it's going to be something different और next time if they call us जब तक अगर अच्छा सीन नहीं होता I will reject it. सही है. No, I think overall I think we talked about this before as well. I think कुछ जरूरत है. I think we talked about this before कि overall तो हमारे scene के लिए अच्छा ही है. Obviously हमें exposure मिल रहा है on TV and everything. You're getting some exposure on like. बिल्कुल. मैं इससे agree करूँगा. मैं इससे agree करूँगा कि जो uncle aunties हैं, the people who watch TV, I don't think like our generation watches TV anymore. Like I don't think so. अभी वो वाला instant gratification वाली आवाम है उनको specific चीजें पसंद है. Binge watching करनी है. Nobody wants to wait for anything. Exactly. तो जो बुढ़े लोग हैं जो मतलब या तो फिर above 30s वाली आवाम है who watches TV, तो उनको मेरे ख्याल से ये पता नहीं था हिप हॉप के बारे में. उनको थोड़ी नॉलेज मिल गई है थोड़ी बहुत मुख्तसर थी. ये भी कोई अच्छी नॉलेज नहीं थी लेकिन at least they know what rap is now. And they also know there is some way that their kid might be able to make money. You know, that's also a big factor in our kind of society. Like, but that's the real myth, right? Like, who's making money right now? Are rappers able to make money? क्या rappers पैसा कमा पा रहे हैं? No, I don't think so. The only
rappers that are making shit tons of money are the ones who are at the top, at the very top, right? उनकी भी मेहनत है obviously. लेकिन क्या सीन है अभी जो अंडरग्राउंड में है कम रैपर्स हैं, they are totally dependent on shows and brands, right? और ब्रांड्स भी बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं आर्टिस्ट को. बिल्कुल. वो ब्रांड भी बेसिकली नहीं करते, ये जो बीच में एजेंट्स होते हैं ना, ये अपनी गेम करते हैं. बिल्कुल ठीक तो है. एजेंट जो है उनसे तो पूरा बजट ले लेते हैं ब्रांड से और आगे आर्टिस्ट को बोलते हैं भाई इतने में ही करना है, इतने में ही करना है. ये वाली गेम चल रही है. इसके बारे में जो है ना नॉलेज नहीं है अभी रैपर्स को. आई थिंक दे नीड टू लर्न अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ इट. और मेरी कोशिश यही है जिसको बिजनेस साइड नहीं पता है मैं उसे समझाऊं थोड़ा बहुत, बिकॉज नाउ आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द गेम. थोड़ा बहुत जितना भी है. तो ये सीन है कि बॉयज को मैं बताता हूँ जो अपने बॉयज हैं कि क्या करना है, हाउ टू गेट डील्स एंड स्टफ, और कहाँ हाथ डालना है, कहाँ नहीं डालना. बिल्कुल ठीक है ब्रो. आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइक आस्क फॉर लाइक लड़की. कौन क्या ब्रो आप क्या कह रहे हो बताओ. हाँ, सो आई वाज लाइक कि अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था कि बॉयज जो हैं बहुत कम रेट्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब उनका भी कसूर नहीं है. आई थिंक एवरीबडी इज इन नीड ऑफ मनी राइट नाउ. लेकिन ये है कि अपनी वर्थ तो पता होनी चाहिए ना हर आर्टिस्ट को कि अगर मैं अपनी वर्थ दे रहा हूँ ये 30 के या 40 के से ऊपर की है, मतलब अपनी आप अपनी वर्थ जानते हो, एंड यू शुड लाइक ऑलवेज सेट अ स्टैंडर्ड फॉर दैट. I think there is a point there that के एग्जाम्पल सेट नहीं की गई हमारे कल्चर में ना इस चीज़ की. बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हमने शुरू से ज़रा आर्ट फॉर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों ने बस ऐसे ही काम करते रह गए काफ़ी अरसा. लाइक किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको कमर्शियली भी यूज करना है कभी ना कभी. और लाइक अब जब हम लोग आ रहे हैं ब्रो इस तरह का भी सीन है कि शायद एग्जांपल्स नहीं सेट हुई हुई, हमारे पास कोई वो नहीं है फॉलो करने के लिए, एक ब्लूप्रिंट नहीं है. ब्लूप्रिंट से जेजी याद आ गया मुझे कि जेजी ने जिस तरह ब्लूप्रिंट छोड़ा ना लाइक कई आर्टिस्ट के लिए, लाइक यू नो व्हाट यू कैन डू विद योर आर्ट. या एग्जैक्टली. हाँ, दैट्स ट्रू. लेकिन the thing is कि obviously hip hop is very new. Even if like people are doing it since 2005 जैसे डार भाई कर रहे हैं, लेकिन सीन ये है कि उस टाइम पे भी ब्रांड्स नहीं थे. अब जो है ना हिप हॉप कमर्शियल हो गया इस वक्त. तो इस वक्त जो हम लोगों ने डार भाई से क्या कहते हैं गेम सीखा थोड़ा बहुत. ऑब्वियसली वी लर्न अबाउट द मतलब कल्चर एंड स्टफ, लेकिन बिजनेस साइड हमने अभी तक नहीं सीखा क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस था ही नहीं. बिजनेस तो अभी आया है. हाँ, अभी बिजनेस आया. एंड आई थिंक द आर्टिस्ट दैट आर डूइंग इट राइट नाउ, आई होप दे लीव अ ब्लूप्रिंट फॉर द अदर आर्टिस्ट, एंड आई थिंक दे आर डूइंग. I think that's what I was about to say. Yeah. That's what I was about to say. Like people like Sunny, people like Moji, people like yourself, and like जो भी अब हमारी उस peers में जो काम कर रहे हैं लोग इस वक्त, I think they have a huge opportunity and potential कि वो एक blueprint set करके जा सकते हैं हमारे बाद के आने वाले लोगों के लिए. Same goes for youngsters. Like at the moment, I think they're the ones that are. No, same. Yeah, I was talking about peers exactly. So I meant everyone who's doing music right now. I meant to say youngsters, including youngsters, obviously. मैं मतलब ऐसा सीन है कि I think they're actually doing a great job with the commercial shit. क्योंकि ब्रांड्स को कैसे डील करना है ये अभी तक किसी को पता नहीं था, एंड आई थिंक दे माइट लीव अ ब्लूप्रिंट फॉर दैट. और टीवी से कैसे डील करना है अब हमें पता चल गया है, और किससे कैसे डील करना है. लाइक थिंग्स आर फॉलिंग इनटू पर्सपेक्टिव एज वी स्पीक. मीडिया से सब पता चल गया ब्रो. ऑब्वियसली इन बिल्कुल नेक्स्ट 5 years में आई थिंक we'll know what to do like properly exactly कि अब करना क्या है. We'll have a clear vision. और अभी I know अभी बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं क्योंकि I was not consistent before. और मैं बिल्कुल केयर नहीं करता था इन चीजों के बारे में. मैं म्यूजिक से मतलब बस शौक के लिए कर रहा था. कोई आउटपुट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी. It's you know you weren't expecting any output from it. You were doing it as a hobby जो हो रहा है, मजा आ रहा है entertainment की. नहीं, I would say बिल्कुल ऐसा भी था.
I would say I wasn't expecting output, लेकिन at the same time I was expecting it too. But मुझे ये लग रहा था कि क्या नाम है कि बस मैं खुद मेहनत नहीं कर रहा था इस पे, मेहनत नहीं कर रहा था मैं. I was like okay. फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं था, बीच में बहुत बहुत अरसा I was like relaxed and shit. फिर अब जब मैंने कंसिस्टेंसी से काम करना शुरू किया since जहाज 2020 से, then I connected with people. फिर शरोज से मेरी मुलाकात हुई, मतलब बात हुई, and I haven't stopped since then. Like Sharoz has played a very big role in me being consistent and me taking this music thing seriously. Do you think कि you would say कि आप career अब start हुआ है जहाज के बाद, before you were learning about how to get into the game? Since you became consistent in making music, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, everything before that was like a learning phase, isn't it? And now since जहाज, I would say I'm still learning, right? अभी भी it's a learning phase, क्योंकि I'm not sure कि मेरा sound अभी भी like मेरा sound क्या है वो मुझे अभी तक properly समझ आ भी रहा है, और थोड़ा थोड़ा I'm skeptic भी कि क्या पता ये मेरा sound ना हो. So I think that's a process we all have to go through. तो मुझे अभी 8 साल हो गए करते हुए, तो शुरू के 4 साल तो मैं गिन ही नहीं रहा किसकी खाते में. फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरी लिखाई थोड़ी बेहतर होने लगी. बट नाउ यार यू आर राइट इन अ वे कि 2020 से क्वालिटी काम निकलना शुरू हुआ है, मतलब मैंने उसको सीरियसली लेना शुरू किया. You started thinking about कि अब मुझे आउटपुट चाहिए. Yeah. No, obviously ये लर्निंग तो कभी भी खत्म नहीं होती ब्रो. अगर आप लर्निंग खत्म कर दोगे तो फिर तो मतलब इवॉल्व होना खत्म हो गया, वहीं पे सब कुछ सैचुरेट हो जाएगा. बिल्कुल. अच्छा ब्रो, ये बताओ कि अच्छा अब जरा लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स. हाँ ब्रो, मैंने आपकी वो वीडियो देखी है जब आप 14-15 के लग रहे हो वीडियो में अबाउट बैटलिंग. सो वो सारा सीन कुवैत में था बैटलिंग का? हाँ bro, that was in Kuwait and I was battling a Somali rapper. I was 16 back then. और कुवैत में क्योंकि सीन ऑन था इसका क्या नाम है बैटलिंग वगैरह का, तो I was pretty in. और स्कूल में भी हम करते थे, मेरे दोस्त थे हेजल, फहद and वेशक, we used to battle each other and सारे लोग जमा हो जाते थे वहाँ पे, लड़कियां, so we had to bring our A game to the battle. ये सीन था वहाँ पे. और उसी से क्या कहते हैं इंस्पायर होके फिर आगे मैं बैटल्स देखता था बहुत सारा. I was बिग डिजास्टर फैन, और मैं डिजास्टर की और अपना मैथ हॉफा वगैरह सबकी बैटल देखता था पागलों की तरह. और लाइन्स डन और ग्राइंड टाइम और हाँ वो वाली मैं पागलों की तरह देखता था. तो आई वाज अ बिग बैटल रैप फैन. तो उसके बाद क्या नाम है फिर मुझे ये पता चला कि रिकॉर्डिंग का भी कुछ सीन होता है. मैं बस ऑनलाइन देखता रहता था हाउ टू मेक अ पॉप फिल्टर एट होम वगैरह वगैरह. तो उसके बाद क्या नाम है ये हुआ कि एक दोस्त है मेरा एमडी रेज, उसके पास डायनामिक माइक होता था एक. तो उसने बोला आई विल चार्ज फॉर रिकॉर्डिंग 10 दिनार. उस टाइम पे उसने मांगे थे, बहुत बड़ी अमाउंट थी वो उस टाइम पे. 10 दिनार कितने बने आई डोंट नो. तो खैर 10 दिनार उसने मांगे, मैंने और मेरे दोस्त फहाद ने जमा करके उसको दिए, और फिर हमने रिकॉर्डिंग की. पहला गाना था, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा गाने का नाम, लेकिन बड़ा अजीब गाना था इंग्लिश में था. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ईद आई, ईदी जमा हुई मेरी, तो फिर मैंने दूसरा गाना रिकॉर्ड किया. नाइस. उसी पैसन से फिर दूसरे गाने तक मैंने उससे इतनी अच्छी दोस्ती कर ली थी एमडी रेस से कि तीसरा उसने फ्री में कर दिया. तो तीसरा जो है वो उर्दू में कर लिया मैंने ट्राई. वो मुझे मोजी और 2 for 3. हाँ तीसरे गाने बिल्कुल इंग्लिश में कर रहा था. फिर मुझे मोजी और तलहा अंजुम ने बोला उर्दू ट्राई करो, पर मैंने उनको गाने भेजे हुए थे अपने. तो मैंने पूछा था क्या सीन है, तो उन्होंने कहा सही है, गुड सीन है, उर्दू में क्यों नहीं ट्राई कर. ठीक है. फिर मैंने उर्दू में किया तीसरा वाला. दैट डिड अ बिट बेटर देन इंग्लिश वाले. लोगों ने उसको पसंद किया. फिर उसके बाद आई डिडंट स्टॉप. उसके बाद से फिर आते रहे. फिर मोजी के साथ मैं कनेक्ट हो गया, कराची नामा आया. उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग करता रहता था. देन आई कनेक्टेड विद मार्शल पाजी, पुनीत.
Yeah, and yeah, that's the time उसके around the बाद time उनके when साथ I tracks है. found you out. Like that's where I discovered you when you started with Yeah, Marshall I Baji. think that's when we started speaking. That's when we spoke for the first time. Yeah, yeah. No, man, that's beautiful because, अच्छा, तो कुवैत से ये सारा सीन स्टार्ट हुआ. But what Hashim Ishaq is बिल्कुल. today as an artist, उसमें कराची का कितना हिस्सा है? Like how much Yeah. influence of Karachi is involved in Hashim Ishaq, the artist? Bro, अच्छा कराची का कराची का इन्फ्लुएंस शुरू से था. इवन व्हेन आई वाज इन कुवैत, मैं ऐसा कोई साल नहीं था जब मैं कराची नहीं आया हूँ. सही. आई वाज कमिंग बैक एंड फोर्थ. मतलब कुवैत में मैं पढ़ रहा था एंड लाइक आई वाज डूइंग अदर स्टफ, लेकिन मैं आता था कराची हर साल छुट्टियां मनाता था. आई वाज कनेक्टेड टू कराची सही. बेसिकली. और उससे पहले मैं बहुत अरसा रहा भी हूँ कराची में, स्कूल गया हूँ मैं यहाँ पे. सही. तो आई न्यू अबाउट कराची. और कराची मतलब वो खून में था कराची ऑलवेज. एंड और उसके बाद मतलब फिर जब मैं वापस आया प्रॉपरली कराची, मुझे आना था बस. माय पेरेंट्स वर नॉट ओके विद इट. दे वर लाइक नहीं नहीं कराची नहीं, अमेरिका मूव हो जा, इधर मूव हो, लंदन मूव हो जा, पढ़ाई कर. लेकिन मैं डटा रहा. मैंने कहा मैंने कराची आना बिकॉज आई थिंक आई हैव समथिंग एंड आई कैन ओनली यूटिलाइज इट हियर इन कराची विद. एंड मोजी वाज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस. मैं चाह रहा था कि मैं मोजी के साथ मिलूं और देन यू नो हम दोनों साथ म्यूजिक बनाएं ये वो. तो मैं आ गया कराची 2017 में बैग शेक पैक कर. That's huge. Like Moji was, मैंने अभी recently Moji के साथ एक किया. Just before you, I spoke to Moji on one of our Bethak, and I told Moji about this, that कि अभी हमारी जितनी भी conversations हुई हैं, you always give a lot of credit to Moji and you always talk about that, you know, कि Moji का कितना है contribution in, you know, bringing you in. So I think that's beautiful, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है ना कि आप अब हम देख रहे हैं, you and me we both know कि किसी नए बंदे को आते हुए देखो जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं a lot of times. And like you said कि you met Moji randomly, like you sent him your music और उसने कहा हाँ ये अच्छा है, इसको यूं कर, इसको यूं कर. So I think that shows कि Moji कितना को अच्छा इंसान है, like not just the artist. मैं अच्छा हमारी जो इनिशियल बात हुई थी 2014 में, इट वाज थ्रू अ मीम. इट वाज शिट पोस्टिंग एंड स्टफ. मतलब हम लोग कोई म्यूजिक से रिलेटेड बात नहीं कर रहे थे. फिर उसी दौरान मैंने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया. मैं शायद दुबई में था या कहीं था. मेरे उस टाइम पे मुझे मोजी का मैसेज आया, हमने बातचीत की एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स. एवरीथिंग इज हिस्ट्री अब. और मैं पहली दफा मोजी से मिला 2016 में जब मैं कराची आया. Me and उमर खान जो के we went to Moji's house और हमारा सीन और बातचीत हुई. and me, Moji and उमर खान we were pretty close and stuff. तो हमारी दोस्ती ऐसे स्टार्ट हुई वहाँ से और अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह. But why didn't you ever think of making a crew with Moji? We did. Big and Bone was a thing. The thing is I am not really good with this shit. Like okay. I have a very different mindset. कभी कभी ऐसा होता है कि आई डोंट एग्री विद स्टफ. मतलब हम लोग सोलो काम करेंगे दैट्स डोप, लेकिन जब एज अ यूनिट आप काम करते हैं यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीवन. सही है. उस मामले में आई एम लाइक नॉट वेरी कन्वीनियंट. ठीक है. समझ रहे हो. मैं थोड़ा सा you have your own way of doing things. इसी तरीके से होना चाहिए. समझ रहे हो. Bro, तो ये बताओ कि why not a crew with Moji and DJ Abdul? और आज की बैठक में जो मेरे मेहमान हैं right there. For me, he is one of the best punchliners in Urdu rap. अगर आप उर्दू गैंगस्टर रैप और उर्दू पंच लाइन्स के फ़ैन हैं तो आई एम श्योर आप ऑटोमेटिकली इस इंसान के फ़ैन हैं. I would like to welcome Hashim Ishaq, aka Big H. Hello, my brother. How you doing? I'm good. Thank you for having me, Fayuk bhai. All good. How are you? All good, bro. All good. Always, man. You know, it's all love. And ज़रूरी था एक इस तरह का सेशन करना because since I've been following you, Hashim Ishaq काफी evolve कर गया as an artist. I am Hashim Ishaq. Not just like as an artist. I'm sure as a person. Thank you, bro. ये आपका प्यार है. And
think, yeah, this is important. Yeah, I think the growth is something. I think we had a podcast. Yes, exactly. We had a podcast last year, I guess, and सही and none of us recorded it. exactly, yeah. वो भी चली गई ऐसी. ऐसे ही और उसके अंदर भी कई इस तरह की बड़ी सही इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने की थी. आई थिंक उनको आज जरा बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, रिवाइज करेंगे, दोहरा रिविजिट लेते हैं. करेंगे. ओके बिल्कुल. हाँ, और obviously perspectives भी बदले होंगे अब मेरे. I have evolved as a human as well. So जो मैंने उस टाइम पे बातें की होंगी वो इस वक्त रेलेवेंट ना हो शायद. नो एब्सोल्युटली. और एक और भी चीज हाँ है लाइक हाँ एक विद द अंडरस्टैंडिंग एज है भी बंदा बड़ी बड़ा कि होता है, क्या बट है एज एक एन दूसरे आर्टिस्ट आप क्या बिल्कुल कहते हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल. ऑफ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा होता है विद एवरी अदर ट्यून दैट यू आर मेकिंग. आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हो. That's true. That's true. Makes And sense. Yeah. and amount of music you've been releasing recently, बिल्कुल ठीक है. I'm नहीं quite और वो sure मैं कि समझता हूँ कई you दफा ऐसे know होता है कि it really helped you like what you evolve. do and क्योंकि I what know there's a cause Moji's and been effect doing कि आप जितना उसमें भी ज्यादा एक म्यूजिक तो है बनाते कि हो आपको like उतना ज्यादा Moji की फीडबैक मिलता है, approach आप थोड़ी उतना different ज्यादा है what you want to अपने आप को express improve करते also हो. sometimes it's Basically, different what do you so think सही. about that? तो Let's उसको start align with करना this. बड़ा मुश्किल हो जाता है कई टिपिकल दफा. बातें तो बाद में करेंगे, इस फिलोसॉफिकल डिस्कशन पे पहले चले जाते हैं बिल्कुल ठीक है. कि do you think हाँ when you make the quantity of music then basically you Storytelling start laid getting back. yeah. feedback Yeah. and then you start adjusting your sound according to that feedback. Do you think that is something that helps, or is it always about self-expression and where you Yeah. are, and what do you think about that? Like how he did on Bolna with you and Dar, what he did on It Bolna. definitely Listen, helps he because normally there's a he's saying that normally when the not student doing is that kind of ready, thing. the He teacher has his arrives, own right? way of. So Shiroz happened to be that teacher for me. Yeah. Uh, Oh, wow. so Shiroz, like he told me where I was lacking and what I should do. He still tells He's me what more I'm like versatile doing than wrong. anyone. So I keep on He's more polishing that than stuff back bro. to back. That's what And with I was every talking to release, him. I'm trying to get better with time. Yeah. So when I back when I back in 2018 and 19 when I used to record He shit, knows how to मैं क्या करता था, entertain. मैं अंदर जाता He था knows how to स्टूडियो के जो entertain, भी isn't रिकॉर्ड it? किया जैसा Yeah, भी yeah. हुआ आ गया बाहर. That's it. Now until I'm satisfied, until Yeah. Sharoz is He knows how to satisfied, entertain his audience. because He he's knows the how to producer entertain and his he has to fans, deal with all that basically. shit. He has to make Whatever it it good. takes. So Moji is a different ball game. When I was talking to Moji, it was something very interesting that I found out, and I also told Moji that when I think about Moji, I don't say he's like a rapper. I always say he's one of the most original and most versatile in Pakistani music industry. Because sometimes Moji do shit that you can't put into the box of hip hop. तो इस तरह की चीजें Moji करता है. So and also I said something to Moji. I'm probably 4 or 5 years older than Moji and older than a lot of people who are rapping now. Hashim already told me I'm an old guy when he said जो 30s के ऊपर वाले लोग हैं ना वो भी वो सुन रहे हैं जो बूढ़े लोग हैं. तो अच्छा बात है. I was saying to Moji कि I've been writing Urdu poetry since I was 13 years of age. ठीक है ना? Yeah. And I'm 31. So probably I've been writing इतने टाइम से जितने कई रैपर्स की उम्र है अब. ठीक है. But until I heard Moji, I did not break the code of Urdu rap. कि मैं अपनी शायरी को उर्दू रैप में कैसे रैप कर सकता हूँ. The moment I started listening to Moji, क्योंकि मैं हमेशा समझता था उर्दू रैप बहुत मम्मी डैडी चीज है. I'll be very honest with you. जो बड़ी गुलाबी चीज है. And even though I was Saraiki, I chose to rap in Punjabi क्योंकि पंजाबी में gangster slangs हैं और वो सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो. But the expression in Urdu was somewhere when youngsters वगैरह जब कर रहे थे जिस टाइप का उर्दू रैप, I don't like it. I still don't like it. I don't like, you know what I'm trying to say. I like words said with expression and cadence and उसका कोई उसका impact होना चाहिए. एक scheme होनी चाहिए. Schemes होती हैं. Consistency of thought होती है. And I think क्योंकि मैं लिखता रहा था बचपन से, then I heard Moji and I was like, oh, अच्छा. क्योंकि पंजाबी के लिए तो Bohemia was there, then Dar was there were a lot of other people as well, but
for Urdu, I think मौजी don't realize कि कितना impact है जो इस वक्त बच्चे आजकल उर्दू में रैप कर रहे हैं. मौजी has a lot of impact on them. What do you say about that? हाँ, I agree with that. And evolution of rap सही है. I think अब जो रैप हो रहा है उर्दू के अंदर, that's very different from what it used to be, right? Exactly. Ali Gulpir and shit. People thought of it as that, like what वो समझते थे एक सब जॉनरा है कॉमेडी का. पहले इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया था बिकॉज़ ऑफ अली गुलपीर. और अली गुलपीर नहीं उससे भी पहले चले जाओ ब्रो, उससे भी आप पहले चले जाओ, बहुत पहले, जिसको अब वो क्या नाम है यार, वो फखरे आलम. एग्जैक्टली, दैट्स द मेन वन. So it was considered as funny stuff. लेकिन फिर लोगों को पता चला जब इवॉल्व हुआ सीन, एंड अब तो उर्दू में असल में लोग स्लैंग से भी वाकिफ नहीं थे. नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट द कराची स्लैंग. उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है वायस, मोजी और अ लॉट ऑफ रैपर्स. उन्होंने जब कराची के स्लैंग्स में बात करना शुरू की, एंड मैं भी पहले दिन से कराची के स्लैंग्स में बात कर रहा हूँ अपने गानों में. पहले दिन से, लाइक जब से मैंने स्टार्ट किया. तो या दैट थिंग चेंज द होल पर्सपेक्टिव. और फिर बाकी पंजाब के भी रैपर्स, दे जंप्ड इन द बैंडवैगन, दे यूज्ड कराची स्लैंग्स एज वेल. तो ऐसा सीन हुआ है बाद में, मतलब अब तो बहुत ज्यादा हो गया. तो शुरू में इट वाज कंसिडर्ड एज समथिंग सॉफ्ट, लेकिन एज द टाइम वेंट बाय, जो कराची की कोर ऑडियंस है उसको समझ आया कि हाँ भाई हमारी तरह भी लोग बात कर रहे हैं अपने गानों में. That is what made them relate to us and other rappers in general. That is absolutely a fact, bro. And that's something like, obviously मैंने as a older listener, जितना भी सीन तो अभी बच्चा है ना हमारा छोटा, तो उस सीन के हिसाब से I'm a bit older listener. तो उस हिसाब से started in 2014. I think you were already like, you had started way back. I met Dar in 2009. 2008-9, I was in Islamabad in Fast University, where I met Maddie and these lot. Before, like, Maddie was kind of a mutual friend. Like, that's where I started thinking of, like, you know, करें कुछ भी. 2011-12 में recorded something here. But point here, bro, even still, I still don't take it seriously. अभी भी बस मैं तो शुगर लगा रहा हूँ. I'm more interested in this, what we are having now, this kind of conversation. That's important too, bro. What can I leave? Part of the culture as well. Yeah. What kind of knowledge can we leave? Again, elements of hip hop mein fifth element is knowledge. So exactly. What can I leave? What can we leave as contributors to this culture for people who come after us? So if we can leave, जिस तरह we just talked about, को म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज है, कुछ मीडिया एक्सेस की नॉलेज है, पैसा कैसे कमाना है. मुझसे वो मैं गया ना देसी ब्लिट्स वालों के इंटरव्यू पे, उसने मेरे से कहा यार ये मुझे बता तेरा 5 साल का प्लान क्या है, you know, what's your 5 years plan for your music? I said my 5 years plan is to keep going everywhere and telling them Pakistani hip hop is the shit. Pakistani hip hop is the shit. Like next 5 years, जहाँ भी तुम मुझे देखोगे बात करते हुए, I'll be talking about this. This is where I'm from, and this is the best shit you'll hear. And like, I'll go out and I'll talk about, and I'll like एक दिन ऐसा आएगा लोग खुद ही realize करने लग जाएंगे कि okay, you know, पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तानी हिप हॉप आर्टिस्ट हो तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छे हो, आपको ऐसे नहीं सीन ने एक्सेप्ट कर लिया. यहाँ पे एक सर्टेन क्वालिटी के लोग आते हैं बेसिकली. तो that's the thing कि अभी रैपर्स इतने सारे हो गए हैं, like there's a very huge amount, एक पॉपुलेशन है रैपर्स. आप पत्थर फेंको रैपर पे जाके गिरता है. बट मैंने एक बार भी लिखा है इसके बारे में. Are they qualified to be called rappers? क्योंकि a lot of them, like I guess, इवॉल्व करेंगे वो टाइम के साथ, इंशाल्लाह, उम्मीद है. एंड बट अभी के लिए दे ऑल साउंड द सेम. अ लॉट ऑफ रैपर्स साउंड द सेम. गिने चुने रैपर्स हैं हु हैव देयर ओन स्टाइल. नए बॉयज में हैं बहुत सारे, हाँ नए बॉयज में बहुत अच्छे रैपर्स भी हैं दैट आई रियली लव. लेकिन अभी जो ब्लॉट आ रही है मार्केट में, आई थिंक दिस इज द थर्ड बैच. द फर्स्ट बैच वाज डार बाय यंगस्टर्स एंड ऑल दोस गाइज, राइट? And Moji as well. Second batch mein main and a lot of other rappers like
कौन हाशिम हो गए, नवाज और हाशिम नवाज, हाँ हाँ हाशिम नवाज, ओवरटेक, मैं भी हूँ, और अब और भी बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं आपके जितने भी जो हम पीयर्स हैं, जो आपका जो अब, हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये सेकंड बैच हो गया, द थर्ड बैच, द थर्ड लॉट, दैट साउंड सेम, दैट साउंड्स द सेम टू मी, क्योंकि हम ये पहली और सेकंड वाली बैच है, उन्होंने बाहर का म्यूजिक सुना हुआ था, उन्होंने बाहर का स्टफ सुना हुआ था, तो उनका अपना स्टाइल डेवलप हो गया थ्रू बिल्कुल आउट ठीक द है। इयर्स। इन सारों ने उर्दू रैप सुन के उर्दू रैप स्टार्ट किया। आई थिंक दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। No, that's a fact, bro. क्योंकि आपको सीखना पड़ता है कि पंच लाइन को बनाना कैसे है। लाइक आप कई दफा मैं ये बात कहता हूँ, लाइक कई चीजें आप सुन लेते हो, लाइक इवन आप लेट्स से यू लाइक टाइलर, आप टाइलर ने कोई एक कॉन्सेप्ट इस तरह का कह दिया that you might be able to use it, even like concepts यूज करने में कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट आप चोरी, लाइक कॉन्सेप्ट आप चोरी नहीं कर सकते, फिर तो उस तरह से तो दुनिया की कोई भी चीज आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर चीज कोई इस्तेमाल भी, होगी। हाँ, एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी, कॉपी, राइट। एग्जैक्टली। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट को, उर्दू रैप डिडंट एग्जिस्ट। अगर एग्जैक्टली इंग्लिश रैप एग्जिस्ट नहीं करता तो उर्दू रैप एग्जिस्ट नहीं और करता। फिर तो आप कैसे, उर्दू तो वो चीज, शायरी हाँ ब्रो सेम विद द उर्दू पोएट्री, और गालिब एग्जिस्ट ना करता तो मेरे अब्बू जी एग्जिस्ट ना करते एज अ शायर, समझ रहे हो, लाइक मैन। तो दिस इज लाइक दिस ऑब्वियसली प्रीडिसेसर, और ये सारी एक चीज है कि कौन सा इल्म, like it's all about the ilm, like the knowledge, and it transcends। तो हम लोगों ने सीखा है, like for myself like KRS-One and Immortal Technique, क्योंकि मैं backpack rapping का बहुत बड़ा fan रहा हूँ शुरू से, so I was like that kind of like Loki, Akala, and that kind of stuff, yeah। लोकी बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है, आई लव लोकी। Oh man, he's the man, bro, he is the man। bro लोकी, चलो इमॉर्टल टेक्निक। इस चीज पे भी बात करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक, फिर हम दोनों हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, हम सब हिप हॉप फैंस हैं जो सुन भी रहे हैं। व्हाट, ऑब्वियसली यू कांट से ओ कौन सा अच्छा है कौन सा बेहतर है, बट व्हाट इज योर प्रेफर्ड रैपिंग स्टाइल व्हेन यू सिट डाउन, यू वांट टू हियर इट, यू नो, लाइक यू वांट टू लिसन टू, obviously mood पे भी डिपेंड करता है, but let's say you are driving and going for a long drive, would you play like a proper a gangster like a Jadakiss Locks album या उस तरह का कोई, would you prefer listening to that kind of shit, or you would listen to IT low-key kind of? At this point, I think as I'm maturing as an artist, my preferred playlist is mostly Jay-Z, right? When you listen to Jay-Z, there's a lot of knowledge in the bars. Gems More after than gems after gems. बिल्कुल। So at this point, I'm a very huge Jay-Z fan. Obviously, Jay-Z has had influence over my style over the years, but Everyone. at this particular point of time, I'm a huge Jay-Z fan. Like, I listen to Jay-Z like crazy. Jay-Z के मैं गाने सुनता रहता हूँ back to back, and that's my preferred style right now. Okay. Something that I would like to listen, huh? Or I listen to a little bit of Kanye here and there, but like Jay-Z is like here for me right now. Okay, so since That's always been. Oh, come on, man. Hove is like we said, he is the blueprint, isn't it? So Hove is the blueprint. Bro. ये मुझे बताओ, let's say you talked about Kanye already, तो इस controversial topic को भी छेड़ ही दिया जाए इस चक्कर में, हाँ, कि डोंडा सुनी है and CLM सुनी है, दोनों एल्बम सुनी है अभी तक या नहीं सुनी है, कैसे? मैंने डोंडा का जेल सुना था featuring Jay-Z, and the title track that featured Pusha T and दूसरा कौन था उसके अंदर, I don't recall. तो वो सुने। Jonah? Is it Jonah? Is it called? No. I don't recall it. मेरे पास डाउनलोडेड है। कल लाइट गई तो मैं बैठा, मैं कुछ करने को नहीं है, let's listen to डोंडा। थोड़ा बहुत सुना and then फिर लाइट आ गई तो मैं I got distracted। तो मुझे मतलब आप समझ रहे हो, अगर बहुत अच्छी लगती तो मैं लाइट आने तक लाइट आती तो भी सुन रहा होता। सही है। सही, अगर मुझे बहुत अच्छी लगती तो मैंने जो थोड़ा बहुत सुना तो मैंने उसको जज कर लिया। आई थिंक मुझे और सुनने की जरूरत है। इट्स अ वेरी एक्सपेरिमेंटल एल्बम। Since I'm a Tyler fan, I will enjoy this as well.
बस थोड़ा सा सुनने की जरूरत है। आई थिंक CLM डाउनलोड थोड़ी देर पहले। आई थिंक उसमें थोड़ा सा एक चीज है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो पहले 5 ट्रैक्स है ना, वो दे आर नॉट नेसेसरीली फॉर हिप हॉप फैंस। वो कान्ये की एक एक्सपेरिमेंटल वो है, जो कान्ये के अंदर एक इंसेक्ट है पड़ा, वो एक्सपेरिमेंटल जो वो करता रहता है बेसिकली कुछ आई टाइम के लव बाद। यार, आई लव Kanye, राइट? आई लव Yeah, Kanye। come on. और मतलब समथिंग दैट आई थिंक ही इज अ जीनियस, विदाउट अ डाउट। No doubt तुम about it. उसको, हाँ, तो मैं जो है ना, शायद अभी सही से सुनी नहीं है एल्बम मैंने। मैं इसको प्रॉपरली जब सुनूंगा Yeah, तो ऑब्वियसली मुझे क्या नाम है समझ आएगी क्या सीन है। अभी मुझे एक दफा बैठ के सुकून से सुनने वाली चीज है ये, वो वाली नहीं है कि भाग बिल्कुल दौड़ में ऐसे ही सुननी। है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसमें और एक और भी एक CLB, एग्जैक्टली यही मैं भी यही बात कहने लगा था कि इस पे इसकी एक फील भी होगी, एक पूरी जब आप पूरी एल्बम, क्योंकि आई थिंक इसमें एक थीमेटिक चीज भी है कि आप जब पूरी एल्बम सुन लोगे 27वें गाने पे जाके आप कहोगे अच्छा यार, इफ यू फील लाइक रियली वाउंड अप आफ्टर 27th सॉन्ग, आप फील करो। ये एक मेरा लाइक जो लोग एल्बम्स शायद नहीं सुनते, या क्योंकि मैं सुनता हूँ तो लाइक ये मेरा एक वे है काइंड ऑफ जज करने का, एक रफ, कि अगर जब आखिरी गाना चल रहा होता है और तब तक मैं वाउंड अप हो चुका होता हूँ प्रॉपरली कि यार क्या हो गया, खत्म क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बकवास थी दरमियान में। पर कई CLB, और CLB मैंने अभी भी डाउनलोड किया। CLB मैंने डाउनलोड किया। आई नीड टू लिसन टू इट प्रॉपरली। अभी तक मैंने एक भी ट्रैक नहीं सुना उसका। ठीक है, और मैं कल से लोगों के स्टेटस देख रहा था, स्टोरियां देख रहा था, लेकिन आई वांट टू हियर इट फॉर माय सेल्फ, क्योंकि क्या आई लव ड्रेक एज वेल। तो ये क्या मतलब ऐसा नहीं है, मैं मतलब आई एम नॉट दैट टिपिकल हिप हॉप हेड जो कहता है ड्रेक इज नॉट रियल, ये वो। I like to listen to his stuff as well. I like to I enjoy everything, you know. I even enjoy the new school music that is hated by most people. I like it. Sometimes you just hear it for the feel of it. It doesn't necessarily have to be lyricism. there you go. So that's the point that a lot of people are I am myself like guilty of it, कि for a very long time होता है ना, मैं बहुत rigid हुआ था इस चीज पे कि मैं भी ऐसा था 2014-15 में। ऑब्वियसली हम सब इस पॉइंट से गुजरे हैं, लेकिन व्हेन यू इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट यू रियलाइज along the way that you know there's more to hip hop than just lyricism. Obviously it's a very huge thing. It plays a very important role, and for someone like me and yourself it's a very important element. Lekin at the same time, as a listener of hip hop, I think we should distinguish between these two things. So when we the very interesting point, and I've got well, let's segue into this then. So do you think since we both know कि hip hop कहाँ से निकला है, क्या history है, the culture and everything, obviously जिसने अगर इस बारे में पढ़ना है या जानना है वो कोई भी documentary देख सकता है या books पढ़ सकता है इसके बारे में जाके। I would suggest them to watch something from nothing, right? Yeah, something. DJ Cool Herc, Grandmaster Flash, उसके अंदर सबकी और KRS-One and how that battle started. It's a very interesting. 1520 Sedgwick Avenue, जाके पढ़ो भी सही इसके बारे में, बड़े अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं न्यूयॉर्क और शिकागो की यूनिवर्सिटीज ने, मैं भी रिसेंटली पढ़ा था। तो मैं एक बात जो कहने की कोशिश कर रहा था कि since we both know where it came from, do you think as a hip hop artist, like you talked, हमने भी बोला ना कि भाई lyricism, it's not only about lyricism. Even जब ये शुरू भी हुआ था तो they were battling, entertaining the crowd. Who was entertaining the crowd more was winning the battles, basically. Like it was about the crowd, like you know, you turn the people up, yeah. मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, फिर अब हमें ये भी एट द सेम टाइम फील होता है कि यार हिप हॉप एक रिबेलियस आर्ट फॉर्म है, इसके अंदर आपको स्टेटस को चैलेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे ये सब भी हो रहा था, बट डिफरेंस ये था कि जो चीजें वो कर रहे थे वही चीजें स्टेटस को चैलेंज भी कर रही थी, लाइक बीट बॉक्सिंग, और जो वो जिस टाइप के वो डांस कर रहे थे उस वक्त, रॉक एंड रोल और वो सारी चीजें वो स्टेटस को थी, वो उनको भी चैलेंज कर रहे थे। तो चैलेंज कर रहे थे ऑब्वियसली द वाइट एग्जैक्टली शर्ट, like Elvis and all were claiming the throne के jazz उन्होंने इजाद किया, उन्होंने इजाद किया, although like it was the black rock and roll thing, so they were बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए, डू यू थिंक एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट हमारा कोई फर्ज है,
हम पे obligation है that we talk about the issues that our society, socio-economic issues in our culture and society? Is there like a duty because we chose this art form? Is it something, do you think, does that like make an obligation for us? What's your opinion? I would say that it is necessary for us to speak about social issues, but is it important only to talk about in our rap, right? हम लोग कभी कभी मतलब हमारी जो ऑडियंस है हम उनसे कभी कभी थ्रू सोशल मीडियम बात करते रहते हैं इन बारे में, ये है वो है। तो मुझे लगता है जैसे हम मूवीज बनाते हैं, सही है, मूवीज में भी बहुत डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हम लोग म्यूजिक बनाते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट जॉनर्स होते हैं। Some people talk about society through their music, and even if we are making gangster rap, and even if we are talking about some funny shit, it comes from our personal experiences. Obviously. And it comes from the society itself. It's a part of it. Like, I don't think society के जो issues हैं, मतलब for example, if you are talking about rape cases or other stuff, हाँ कभी कभी उससे बात जरूर, मैं तो कहता हूँ कभी कभी नहीं, बहुत जरूरी है उस पर बात करना, बट आई डोंट थिंक कि हम पे एक ऑब्लिगेशन बन गया कि हर दफा उस पे ही गाने बनने चाहिए, बैक टू बैक विद टाइटल शिट पे आ रहा है गाना, सही है। उसमें और उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस रखना चाहिए, सही है। आर्ट के अंदर ऑब्वियसली हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए ये चीजें, आप सोसाइटी के इशू एंड स्टफ, लेकिन इट्स नॉट लाइक व्हाट यू कॉल इट, ये जबरदस्ती फोर्स नहीं करनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हो किसी का अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है, इफ समबडी वांट्स टू एक्सप्रेस के ये सोसाइटल इश्यूज है एंड इट्स पार्ट ऑफ हिज सेल्फ एक्सप्रेशन। बिल्कुल, I've spoken about certain social issues in my song. Indo Pak collab जो में मेरे उसमें मेरी यही कोशिश होती थी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बना रहे, और we should not fight and like you know we are the same people basically। और वो मैंने एक गाना बनाया भी था, और वो मैंने दिल्ली के एक चैनल को दिया था just for the sake of it, because obviously गली हिप हॉप को दिया था। गली हिप हॉप, I remember that। सही है वो गाना। तो मैं कभी कभी बात करता हूँ इस बारे में, और जरूरी भी है बात करना इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं कहता हूँ जितना आप फोर्स करोगे ना, अगर नेचुरली आता है ना, आप मतलब कभी मैं बैठा हूँ और मुझे वाकई गुस्सा आ रहा है, इस चीज पे, और वो निकल रहा है मेरे पेन में, जेन्युइन इमोशन है, तो ऑब्वियसली मैं इसको रिकॉर्ड करके प्रेजेंट कर लूंगा आगे। लेकिन अगर मुझे बैठ के, मैंने देखा यार 7 बंदे बात कर रहे हैं इस केस के बारे में, तो अब मुझे भी करना चाहिए, मैं उठाऊं पेन और फोर्स करूं अपने दिमाग को कि हाँ भाई इस बारे में बात। That's more like following trends, isn't it? वो फिर ज्यादा ट्रेंड, I think वो that defeats the purpose. Basically आजकल यही सीन है कि सोशल इश्यूज पे तभी बात होती है जब इससे ट्रेंड सही है, वरना मुझे बताओ अगर अभी इस वक्त कोई करेगा, ऑब्वियसली उनको इतने मतलब अटेंशन नहीं मिलेगी इस चीज पे। बिल्कुल ठीक है। बट आई थिंक सनी इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो regardless, Chen K as well. I always say Chen K is also someone who's doing it, or like उसकी टेक्निक के बारे में मुझे जो भी एतराज़ात हैं, that's a discussion for another day. अगर कभी मेरी पर्सनली उससे बात होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इधर उधर बोलता रह गया, बट I thought about it, अगर मेरी उससे कभी पर्सनली बात होगी, he should be the only person मुझे ये कहना चाहिए कि भाई तेरी टेक्निक ये वो, इंस्टेड ऑफ अदर पीपल, क्योंकि उसने जो भी उसकी टेक्निक है उसने अपना आप को एस्टैब्लिश कर लिया उस टेक्निक के साथ, उसके ऑडियंस को वो पसंद आती है, दे लिसन टू इट, यू नो, लाइक अगेन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट जब हिप हॉप स्टार्ट हुआ। हिप हॉप कोर हिप हॉप ऑडियंस को शायद चैन ना समझ आए, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी अपनी एक ऑडियंस है, देयर यू गो, एंड उसकी ऑडियंस को वो पसंद आ रहा है, that's what matters, and he's speaking about the issues जिससे वो रिलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। I think that's dope for him. No, I think it's dope for everyone. It's dope for you and me. It's dope for everyone because like यही चीज है कि Chen is that face of Pakistani hip hop that is talking about the issues, so you and me can talk about gangster shit. Basically, you know, like that gives us enough space. Like when you have more diversified or artists, तो हम ये नहीं है कि
अब 25 लोग गैंगस्टर रैप करना शुरू कर दें, फिर मसला क्या है, वो जिंदगी भी वो ना गुजार रहे हो, वो जिंदगी भी वो ना गुजार रहे हो, दे हैव टू फेक इट, यू गेट मी, बिकॉज इफ you know what I'm saying. Bilkul. And I think Chen is also evolving as an artist. Like I think he's developing his own style, but at the same time he's getting more technical with it. Yeah, बिल्कुल ठीक है. But same, लेकिन Sunny is a whole like different. Oh yeah, Sunny is a whole different ball game because Sunny को मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, और Sunny का जो evolution है, I think that's beautiful as well. Because Sunny used to be very, what you call it, Sunny used to be very different back then. उसका स्टाइल अलग था, उसने फिर अपना स्टाइल डेवलप किया. I think that खबरनामा album was a very big change for him. और खबरनामा से लेके अब तक का जो Sunny का सफर है, I think he has dropped nothing beautiful. but gems. And it is beautiful. Like एक और चीज ये भी है कि like it's like you've been observing Sunny, I've been observing Sunny as well. बहुत खुशी होती है देख के when someone like Sunny finds himself and he hits that note, basically, like he hits that note. And I have had that conversation with Sunny, right? I have had that conversation with him couple of times. Sunny ने जो अभी अपना recent style develop किया है, and he dropped some of like hits जो trending पे भी रहे हैं. क्या नाम है गानों का, दिमाग से ला हासिल, almost like ला हासिल और जो अभी एक और ट्रैक आया, जो इंडियन बॉय के साथ स्क्रैच के साथ एक भी उसका आया, अभी वो भी आया था. हाँ, तो सनी अभी एक बहुत मैच्योर राइटर हो गया. ही इज नो लॉन्गर समथिंग वी हर्ड इन 2016, राइट? एब्सोल्युटली. अब एक बहुत मैच्योर लिखा रही है, उसका पेन गेम बहुत स्ट्रांग है. And he doesn't have to do multiple syllables या फिर word plays. His content itself is good. Expression is so much expression. Yeah. There's so much. There are very few artists that talk about very simple stuff, yet it touches your heart. One of them is Sunny Khan. One of them is Nabil Akbar. I like Nabil Akbar's work as well. हाँ, और ये दो artists जो है ना, वो हैं जो simple सी बात कर जाते हैं, लेकिन वो आपकी दिल को छू जाती है. At the same time, like you love it. Like it doesn't have to be very like metaphorical, deep, and it doesn't have to be technical. It doesn't have to be technical. It's pure poetry. Like when Akala said Akala said, take shortcuts, get cut short. Yeah, it's one of my favorite. But like, how the hell nobody ever said this before, Akala? Yeah, like look, कितना सिंपल बार है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है. और बहुत सारे ऐसे बार्स हैं, सही है, जब मैं सुनता हूँ कहता हूँ यार मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया. That's the best part. वो सबसे बेस्ट चीज होती है जब आपको ये कहने पे मजबूर कर दे, ना क्यों नहीं लिखा ये. हाँ यार, हाँ कि मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया ये बात. That's it. Yeah, so that's beautiful. Bro, यही सीन है. अच्छा ये बताओ, what do you, I know you are a big fan, like we already talked about battle rap, ठीक है ना? You're a big fan of battle rap, you follow it, you know how I am passionate about it as well, I follow it सुबह दोपहर शाम. तो अब सीन ये है कि ये मुझे बताओ, what are we missing in our scene to take our battle scene to next level? Obviously events तो नहीं हो रहे ना, अभी तो events भी नहीं हो रहे ना, obviously वो भी एक reason है. अभी नहीं हो रहे, और लास्ट इवेंट भी बहुत पहले हुआ था, ठीक है, जिसमें फादी नोमोलॉजी एंड ब्राउन वगैरह मैंने भी करवाया 2019 में यार. अभी फादी और उसकी, हाँ आपने 19 में करवाया. हाँ याद आया मुझे, भावलपुर में आपने करवाया. अब उसको भी 2 साल हो गए. उसको भी 2 साल हो गए. 2019 में आखिरी हुआ, सही, बिल्कुल. हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि लड़के यूनिटी लैक करते हैं, ठीक है. मतलब आफ्टर द बैटल आपको जो है ना, आप ऑन ग्राउंड दुश्मन हैं, ओके, लेकिन आपको जब आप निकलते हो वहां से, इट्स ऑल लव. वो चीज मिसिंग है, जिसकी वजह से जो दूसरे लड़के ना, उनका भी दिल खट्टा हो जाता है. वो कहते हैं अच्छा अभी हम बैटल करके निकलेंगे, ये फजूल के बीफ फटे वटे, यू डोंट वांट इट. जो मेरी नजर में है, और जो मेरा जाती पर्सपेक्टिव भी है, बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन दैट लाइक्स ऑल दिस शिट. मतलब मुझे
बीफ से मुझे कोफ्त आती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग. यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक अगेंस्ट द गाय, और फिर आपको डिस्ट्रैक्ट बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है. I don't like that shit. मतलब obviously मतलब I would enjoy it if it happens with me. I would enjoy the process, but I'm not very fond of it. मतलब I'm not saying bro, बात पता है क्या है, हमारे यहाँ पे जो इमेच्योरिटी सीन है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये बात है कि like let's say we organize a battle and Hashim Ishaq is battling XYZ, yeah, and this guy is also a very professional guy. ठीक है ना, वो भी बड़ा प्रोफेशनल है, आप दोनों बाहर निकलोगे, गले शले मिलोगे, सही है. आई एम सेइंग अगर सब ठीक है, अपोनेंट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सीन में इज देयर एनीथिंग मिसिंग इन फ्रॉम द कल्चर, लाइक लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है किसी हद तक. हिप हॉप की नॉलेज तो वैसे ही नहीं है ना लोगों में. अगर आप बैटल कल्चर की बात करो तो लोग वाकिफ नहीं है उससे प्रॉपरली, और जो बैटल करने भी आए ना उनको लगता है ये जुगत का वो मुशायरा चल रहा है, वाला मुशायरा. They don't know the lyrical aspect of it, right? They don't know how to come up with bars. They don't know how to diss the opponent. और उसके बारे में रिसर्च करनी है आपने उसके बारे में पता लगाना है, पूरी प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च करनी है, क्या क्या करता है उसका नेम उसका लोग उसके कितने यार वो करते हैं. अब सिर्फ और सिर्फ जो नेम फ्लिप्स है, हम अभी तक मैंने नेम फ्लिप सिवाय इनकलाब ने जो एमडी को डेनिश और पोलिश, तो उसने उसको दानिश डेनिश और वो की थी, उसके अलावा मैंने किसी को नेम फ्लिप करते ही नहीं सुना. नेम फ्लिप आई रिमेम्बर लाइक सेंडिंग हिम सम ऑफ द बैटल्स बिफोर ही बैटल्ड इनकलाब. वो पहली वाली बैटल जो उसकी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. सही हाँ, तो उससे पहले मैंने उसको बोला था कि ये सुनना तुम, डोंट लाइक दूसरी बैटल्स देखो लोग बैटल करते कैसे. एंड ही वॉच्ड इट एंड आई कुड सी इट इन हिज बैटल. उसने बड़ी 2-3 बार बड़े मुझे अभी भी नहीं भूलेंगे. उसने बोला था सूबा पंजाब तबाह किया उस्मान बुजदार में. अच्छा, फनी थिंग इज उसका स्टाइल भी बड़ा मजे का है. He battles like he's in a mushaira. Yeah. And I like it. It's his own style, right? Yeah. That's what makes him stand out. Yeah. No, भाई ये एक चीज इकबाल ने एक बड़ी अच्छी, जब मैं इकबाल के साथ बात कर रहा था रिसेंटली, उसने एक बड़ी अच्छी चीज को पॉइंट आउट किया. जब मैंने उससे ये सेम क्वेश्चन किया ना कि हमारा सीन क्या मिस कर रहा है बैटल रैप, तो उसने कहा, वो भी ही इज अ फैन ऑफ बैटल रैप एंड एवरीथिंग, वो कहता है यार मसला ये है कि हमारे लोग पोइट्री समझते हैं, मुशायरों में भी बैठते थे, चीजें समझते थे, कब से हमारे पास एक कल्चर एग्जिस्ट करता है. पर जिस सेटिंग में होती है ना बैटल रैप, लाइक जो उस पिट में होती है और जो ऑडियंस खड़ी होती है और आसपास, उसके लिए हमारे लोग रेडी नहीं है, या उनको समझ नहीं है कि नहीं. अगर रेडी है भी, मुझे बताओ कितने लोग हैं जो कर लेंगे बैटल. अभी भी अगर आप अनाउंस करते हो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल volunteering to do it, right? They would love to participate in it and your show will be a hit. अभी जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं वहां पे रैपर्स की कमी नहीं है, और शौक भी है लड़कों को करने का. उन्होंने बड़ी पूरा ये जो फादी वाली और नमोलॉजी वाली बैटल देखी है, उसके बाद से दे आर रियली इंटरेस्टेड इन. मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है बैटल. तो आप और मैं जो है वो अभी भी पेज के एडमिन्स हैं देसी बैटल लीग के, उसमें अभी भी मैसेजेस आते हैं, व्हेन इज द नेक्स्ट बैटल, आई वांट टू बैटल दिस गाय. पीपल आर इंटरेस्टेड, पीपल वांट टू डू इट, बट द ओनली थिंग इज I think they don't know how to do it. Yeah, there you go. I can show at least 6 or 7 different messages in my inbox, people asking me कि लोधी भाई we want to battle. क्या आप हमें कोई ओपोनेंट, फिर लोग पूछते हैं यार आप ओपोनेंट कैसे सेलेक्ट करते हो, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, फलां कैसे होता है, चीजें पूछ रहे होते हैं. आई हैव नो इशू विद ऑब्वियसली एक्सप्लेनिंग ऑल दैट टू एनीवन. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप मेरे पास आते हो, आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप देसी बैटल लीग के प्लेटफॉर्म पे बैटल करना चाहते हो, और आपकी एक 16 बार की वर्स भी मैंने कभी नहीं सुनी हुई अपनी लाइफ में, तो आई जस्ट don't feel comfortable about telling you that you can battle first of all. Exactly, like कुछ तो हो, कुछ तो फ्रीस्टाइल अपने मोबाइल पे किया हो,
बार्स किए हो ना तुमने कभी कुछ लिखा है, और लड़के अक्सर ये करते कि लिख के भेज देते हैं, इससे मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। इससे क्या होगा? हाउ यू प्रोनाउंसिंग योर वर्ड, एनंसिएशन, योर डिलीवरी, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो मुझे ये अभी भी लड़के मैसेज करते हैं कोलैब करेंगे ब्रो, दीज आर माय लिरिक्स, मुझे लिरिक्स भेज देते हैं। मैं क्या करूं तेरी लिरिक्स का? लाइक आई वांट टू लिसन टू योर स्टफ एंड आपको मैं बताऊं आई एम ओपन टू कोलैब। सही है, मैं वैसा बंदा हूं ही नहीं। हाँ, कोई एरोगेंस नहीं है इस तरह की, कोई अच्छा काम कर रहा है तो बंदा, तेरे 200 व्यूज हैं, तो मैं नहीं करूंगा, तेरे इतने शब्द हैं तो मैं, ब्रो बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम दैट शिट। अभी जाके मेरे कुछ मुश्किल से 2000 सब्सक्राइबर्स हुए, अभी जाके, मतलब आई हैव बीन देयर ऑल द टाइम। और ये हाँ, क्योंकि सीन ये था ना कि मैं तो चैनल पे अपने डालता ही नहीं था, either giving it to DesiHipHop.com या मोजी के चैनल से आ रहा था, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, because I wasn't taking it seriously। जब अब मैंने सीरियसली लेना स्टार्ट किया। और ऐसे ही अगर आप भी अपने आर्ट को सीरियसली लेते हो तो फिर आपको सिर्फ लिख के भेजने से ज्यादा करना होगा। ऑफ कोर्स नहीं, और आपको इसका मतलब समझ ही नहीं है अपने आर्ट की ब्रो। लाइक मैं भी ये बात मैं बंदे का नाम नहीं बताऊंगा, बट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट यूके आर्टिस्ट, मैं उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा था बड़े अरसे से कोलैबोरेशन के लिए। तो मैंने एक डेमो बनाया, वो डेमो एक शरोज को भेजा, शरोज ने वो डेमो पे थोड़ा सा काम किया, he sent it back to me। I said okay, I sent it to the guy, he said he don't like it। I worked on another one, you get me, and I sent that to him। I'm still waiting for the response। So what I'm trying to say is, ये नहीं होता। मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कोलैब क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। कई इस तरह के मैसेज आए हुए जो खाली कहते हैं ब्रो कोलैब क्वेश्चन मार्क, और मैं इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, आज ही हुआ सीन। मैंने आज थोड़ी देर पहले आपको भी मैं भी इसके बाद स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। बंदे के 7000 फॉलोअर्स हैं। सही है, सब कुछ है, गुड सीन है। मुझे मैसेज आता है हाशिम कोलैब क्वेश्चन मार्क। सही है, what am I supposed to like do with that? Yeah, exactly. That's do you have a plan? Do you have a plan? Do you have a demo made for me? Yeah. तो ये आपके भले जितने भी टशन हो, आपके भले जितने भी फॉलोवर्स हो, आई डोंट केयर। अगर आपके पास कोई गेम प्लान है, आशिम कोलैब क्वेश्चन मार्क से आगे क्या, लिटरली उस बंदे का मुझे ये मैसेज आया। इसका मतलब है यू डोंट अंडरस्टैंड योर ओन आर्ट ब्रो। मैं यही बात कह रहा हूँ, लाइक इफ यू कांट हेयर, ओके हमने काम किया, हमने भी रिसेंटली काम किया। आई थिंक दैट गाय रीच्ड आउट टू मी। नाउ व्हाट आई एम लाइक assuming is कि वो ये चाह रहे कि मैं उसको डेमो बना के दूं। मैं उसको बताऊं अच्छा हाशिम कोलैब, यस ओके लेट मी मेक समथिंग। आई एम ऑलरेडी मेकिंग 50 ब्रो, आपकी आरती ना उतारूं मैं, आप आओ, मैं आपकी आरती। I am already making 50 tracks a month. You will have to do a bit better than Hashim collab question mark. Obviously, I reach out to a lot of people. अभी भी मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह रिवील होगा वो टाइम के साथ। There are some pretty good collabs. लेकिन मैं उनको अप्रोच करने का ये तरीका होता है, मैं उनके लिए पहले बीट बनवाता हूँ, अपना डेमो रिकॉर्ड करता हूँ, उनको बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समथिंग आई हैव फॉर यू एंड आर यू इंटरेस्टेड। वो कहते हैं हाँ तो ऑन सीन, ना तो भी ऑन सीन है, कोई मसला नहीं है। और ऐसे होता है आप किसी को इस तरह से अप्रोच करते हो एंड जेन्युइनली लाइक वेरी रेयरली इट हैपेंड ब्रो। आई वाज ट्राइंग टू लिंक लॉकस्मिथ, ठीक है ना, I emailed Locksmith. The money he asked me was way above my budget, okay, and that's why I couldn't get it. But I sent a demo. He liked the demo. He responded to me saying, you know, that's the fee. If you can pay that, I'll do the track. And obviously, it was way above my budget back in the days. I'm talking about like 3-4 years ago. So my point is, उसमें कोई problem नहीं है. You know that there is no problem in that, but as long as you've no problem in rejection. Exactly. I think alhamdulillah, none of the rappers that I have asked for collab have rejected. I'm working with all of them. There's a proper way of doing it, right? Yeah. ये भी education की जरूरत है लोगों को कि how to approach for collab. There you go. Absolutely. Make something
record a demo, like present it properly, and then send it to the artist you want to collab with. और sometimes लोग पैसे भी नहीं मांगते, और sometimes ऐसा होता है आप उनको कोई चीज भेजते हो, वो इस तरह से क्लिक कर जाती है अगले बंदे को कि वो करना चाहता है उस पे काम. मैं जो है ना वो पेड कोलैब्स तो करता नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे जो भी रीच आउट करता है, मुझे ट्रैक अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है. इसमें मतलब कोई ऑब्वियसली, और अभी ऐसा है भी नहीं कि ऐसा सीन है भी नहीं अंडरग्राउंड में कि somebody would pay me for collab. तो ये है कि या तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, हाँ नहीं, लेकिन bro the thing is if I love the work I will do it. Yeah, definitely. That's on me. Got you. That's on me. तो ये अभी मुझे 2-3 लड़कों का मैसेज आया है, what's the price for your verse. अब मैं उसको वर्स दे दूं, प्राइस भी बता दूं सर, और गाना अच्छा ना हुआ, हाँ ये तो अपने डिस्कोग्राफी पे धब्बा है ना. दोस्तों डिफरेंस है ना उन चीजों में. मुझे 3 मैसेजेस आए हैं टोटल अभी पिछले कुछ महीनों में. 3 मैसेजेस दिए हैं जिन्होंने मुझसे पेड काम की प्राइस पूछी है. ठीक. मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, इफ द वर्क इज डोप आई विल डू इट फॉर फ्री. ठीक है. सही है. That's how I approach these things. Until and unless it's a brand and it's paying me well, yeah, you can take a simple verse from me. I'll give it to you. Yeah. तुम्हें जिस तरीके की वर्स चाहिए मैं दे दूंगा. If you're paying me a good amount. Yeah. That's how it's done. Like you're a writer, isn't it? If you want something specific, like they want you to write something specific for them, then obviously you're gonna charge them for that. That's whole a commercial bit of it. That's how it works. Yeah, and the other thing is just like how we did Khar. Even though we are good friends, like you know me, we've been talking for years now. I still sent you a demo. I sent you a song. I was like, bro, ye sun कैसा लग रहा है, you feel it, even though हमें पता है if you ask me to do anything or I ask you to do anything, we will do it if it's a vibe. If you had texted me ये collab करता है, I wouldn't ask you कि भाई क्या सीन है क्या. I would be like जो beat भेजोगे मैं उस पर कर लूंगा. That's how it is. लेकिन फिर भी आपने डेमो भेजा and I loved it obviously. तो और मैं क्योंकि and I came with the UK approach. मैंने वही फ्लो किया, big month. जो उसमें आता है ना वो big you know Bobby Rex also calls himself Big Bobby Rex, so every time that plays it says big. Bobby Rex messaged me one day, he's like, bro where ये like it's like मुझे ये voice note चाहिए, इसको voice note करके भेज मैं अपनी battle के. big man. I said this is my brother. I was watching this documentary about UK hip hop, The Tower Dreams, जिसमें अपना क्या नाम है उसके बारे में बात की गई है. What's that guy यार BBC में जो Fire in the Booth में Charlie Sloth was a rapper. Yeah. He was a rapper back in the days. He was actually a gangster. He was a proper gangster. He got stabbed and shit. Like बहुत मुश्किल बाद में. और there are a lot of rappers in UK that did really well, but अभी वो उनका इतना सीन नहीं है. I don't know where they went. Like so, like there was a lot of big music, grime. No, वो तो सारे हैं bro. जो grime legends है ना, देखो. Like again, I'm a big UK hip hop fan. So let's talk about it. Slim उसके अंदर Slim एक rapper था ना, Slim something. वो भी Charlie Sloth के time पे था. 2007 में he was huge. I think I think there was a lot of people who were like क्या कहते हैं so solid crew that, so basically जब यहाँ का जो grime और garage scene है ना back in the days, वो बहुत crew basis, बहुत ज़्यादा crews थे उसके अंदर. उस टाइम पे मैंने सुना है UK में pirate radios होते थे. Exactly, मैं ये कहने वाला था. हाँ, there you go. Pirate radios और crews का scene. Crews का scene था. तो मैं I was following this shit like very closely recently. मैं देख रहा था कि UK का क्या सीन है. US से तो सब वाकिफ हैं. Top 3. I don't know कि UK में Top 3 UK. Let me give you my top 3 UK. And they keep changing, like interchange होते रहते हैं. 1, 2, 3 आगे पीछे होता रहता है उनके projects के हिसाब से. Kano, Reg 32 and Gets. Kano, Reg 32 and Gets. Kano का पता है ना, Sully from Top Boy.
मुझे मैं I might have heard of him, लेकिन मुझे इतना properly नहीं पता। टॉप बॉय देखी है? टॉप बॉय जो शो देखा? हाँ, टॉप बॉय शो देखा है मैंने। सली फ्रॉम टॉप बॉय, सली जो है टॉप बॉय में, that guy is a rapper. Kano is a bloody legend. उसको रैपर कहना ब्रो डिसरिस्पेक्टफुल है। He is UK hip hop royalty bro. ये होता है आपका दिमाग खुलता है। I'm more of a political. One point he had to stop dissing people. And हाशिम हर सैटरडे आता है एक गाना लेके